सर नेक्स्ट वीक 22 से ही है, मतलब मार्च को। मार्च कौन सी मंडे से? यस सर, मंडे से ही। मार्च से? अच्छा, गैप नहीं है, इसका मतलब है कि ये तो फिर ठीक है। सर गैप है अंदर 3 वीक्स का। आप ये आपके ना आवाज कट रही है। सर हमजा वो ये क्या कह रहे? साइकोमोटर है 3 वीक। जी, गैप जहर जी। सर वो मैं कह रहा था कि मिड्स है 22 फरवरी से 1 वीक सर, उसके बाद फिर 3 वीक्स जो है वो गैप है, साइकोमोटर है उसमें, मतलब हमारी लैब्स वगैरह की इवैल्यूएशंस वगैरह, और फिर उसके बाद दोबारा से हमारे फाइनल्स हैं 22 मार्च से। अच्छा, एक हफ्ते का गैप है? सर 3 वीक्स का हमारा गैप है। अच्छा 3 वीक, अच्छा 3 हफ्तों का गैप है। या सर उसमें वो लैब्स की इवैल्यूएशन या मतलब जो भी हमारी परफॉर्मेंसेस वगैरह इस तरह की चीजें वो हैं सारी उसमें। ओके 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 जी। So your new topic that needs to be covered, that is regarding the arches. As you know, that arch is a compressive member. The load is distributed through compression onto the springings, abutments, sides, and this is a very economical procedure if we are using the bricks in if we are producing the arch by using the bricks. And formerly in the older ages, all basic structures which were requiring the space underneath were constructed using the arches, because concrete that is also weak in compression. Similarly, you cannot have any flexural action if you are using the bricks. So that was the only way in the older ages. That was the only way to have a space underneath. Like if you are if you are to construct any structure above the canals, above any other channel, then this was the least expensive structure in which the load that was distributed, that was distributed and that was transferred to the ground through the arch. This is also known as arch action. What is arch action? It means that the load is being applied at the top, and through the continuity, all the bricks are in contact with each other. So the load that is distributed, and transferred to the ground, the ground through the arch action, means in compression. So this is, and you have also gone through this arch, three-hinged arches. Now, as in this analysis, I told you in the beginning that this subject, and from now onward, all the subjects are related to the analysis of indeterminate structures. Now, if there are only two hinges, then that is known as two-hinged arch, and this is indeterminate in nature. You can see. नजर आ रही बेटा सबको? Yes sir. हाँ जी. So this is two-hinged arch. You might be you are well aware of this one, and this is three-hinged arch. You have covered this topic, three-hinged arch, in your elementary structure analysis, and now in this session you will be considering the two-hinged arch, and you know that this is hinge who is over there. There may be hinge, there may be fixed support, like this one, fixed arch, and this is the tied arch. Okay.
This is also a type of structure. This is three hinge arch. This has already been covered, and now we will be covering the two hinged arch. Okay. Now this is a terminate structure, and we will be considering we will be considering and giving the detail regarding the analysis of this two hinged arch. So as far as in general, you know that an arch is an in-plane curved or rib supported and loaded in a way that makes it act in the direct compression. So this direct compression load is coming from the top, all this part and the part on the both sides of the crown, those are in compression, and the load or the force that is being distributed, that is being transferred to the abutments, to the abutments through this arch action. So arch action is basically the load that is that can be described in a way that arch action is an action in which the load is being transferred to the abutments in compression. So this is also known so it acts in indirect compression. For example, the picture shown is parabolic symmetric arch that is loaded with the distributed load that varies linearly over the span L of the arch. It is fixed at A, and this is very simple. This is basically all description is given over there. Now this is not included in your course of midterm, whether it is included in the end term course. However, because the time is, so we will not be wasting the time. So this is being introduced. Otherwise, if you need to review any previous topic, that can also be reviewed. Only two topics are there for your uh, midterm: force method and the slope deflection method. Both methods are to be covered in detail by you, and there may be any type of numerical that you may assess. So get prepared for that, and inshallah, hopefully, I hope that you might have um, done it and practiced all the numericals related to the use of force method and slow deflection method. So this is a basic. No, this is the this figure that is this figure is showing you the different parts of the arch. Is the outermost part that is known as extrados. This is intrados or soffit. Underside of the beam even, this is an arch. But if there is a beam, the underside and the lower face of the beam, that is underface of the beam, that is known as a soffit. Soffit. Okay? This is the central rise, the top, the highest point, that is crown, and the ends are, these are known as abutments on which the arch is resting, and the part of the end part that which is resting on the ground of the arch, that is known as, those are also known as springings. These are the springing end जो होते हैं springings कहलाते हैं, और this is known as spring line. Spring line. So with the development in structure as engineer adopted two hinge and hingeless arches instead of three pinned arches. Two hinge arch is a statically indeterminate. Usually, horizontal reaction is treated as a redundant as is evaluated by the method of least work. The analysis of two hinge arches that will be discussed, and few problems will also be considered. Now this is these are the different types of the arches. You are well aware of that, and you might have gone through that one. This is not new one. Fixed arch here. If fixed supports are there,
This is tied arch, 3 inch, 2 inch arch, and these are the actual examples, physical examples for the different types of arch. Now, an efficient use of an arch can be made only if a fully horizontal restraint is developed at the supports. Hold on, please. If full horizontal restraint is developed at the support, now this is an efficient usage of the arch. And basically, this is relevant to the stability of the arch, stability of the structure. If you are having full constraint horizontal restraints, okay, then it will be stable structure. Secondly, it will be transferring the whole load efficiently. So an efficient use is that you must develop the full horizontal restraint at the support. If either of the support allows some movement in the horizontal direction, it will tend to increase the bending moment to which an arch is subjected. An arch would become simply a curved beam. It will become a beam. The bending moment in the arches due to the applied loads is reduced due to inward thrust. Analysis is carried out to find out the horizontal thrust and also to find the bending moment to which arch is subjected. Okay? So this is very simple. And beam action and the arch action. Uh, you can see this one. This is beam. In this case, you can see there is no horizontal. In general, beam is loaded perpendicular to the longitudinal axis, horizontal axis, and there is no horizontal restraint. And the dominating effect, that is the bending moment. Dominating uh, parameter, that is a step that is developed in the beam, that is the bending moment. Flexural action, that is the dominating part, whereas in this case horizontal reactions at the supports, those are developed. So it may carry more load as compared to this horizontal reaction, this simply supported leather beam. It can support more load, it can take more load as compared to this simple beam. So beam action versus the beam and arch carry similar loading if M is equal to moment is bending moment due to the applied load at the distance x on the simple span of the beam, whereas then bending moment is this one in the arch. So the positive sign can be used with care. Negative sign will be used if the horizontal thrust is inward or vice versa. In the later case, it will behave as a beam. If the horizontal, this restraint, the reaction that is acting in the horizontal direction, away from the outward, then it will be simply a beam. It will act as a beam. So it must, this is the basic difference between the arch action, arch and the beam. This is the difference between the arch and the beam. Now compatibility question. Now in this case, the arch action that can only be analyzed using the, I have told you that the method of least work, this is very helpful in analyzing the three-hinged indeterminate arches, and that is available over there. And compatibility equation, we need to develop the compatibility equation and then we can analyze it. अच्छा, आपको पता है, you might be knowing that there are papers which papers have been started for session 17 and 20, and also we are to perform the duties in the exams. So time
जो है वो बहुत कम होता है इस हवाले से। इसी तरीके से ये कल भी जो है ना टाइम थोड़ा होने की वजह से, तो ये आप यहाँ ये मैं आपको सेंड कर दूंगा अपना CR जवाब, क्या नाम है आपका? सर उजैर। अफजैर। तो ये बेटा मैं आपको इसकी जो है ना ये टू टू हिंट आर्च ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। और आपने इनको शेयर कर देना चारों सेक्शन में, ठीक है? और इसकी सर डिटेल फिर जो है स्लाइड्स ना इसकी। जी स्लाइड। ओके सर। और ऐसे करना कि ये जो है ना क्या नाम है ये अ, हमजा से हमजा से जो है ना ये हमजा बेटा ये आप इनको मेल कर देना। हमजा। सर वो है सारी क्लास के पास है, वो आपको इंशाल्लाह सेंड कर देंगे हम रिकॉर्डिंग्स। हाँ जी। वो बेटा आपने ना ये हमजा जो है ये इसको सेग्रीगेट करेंगे, डॉक्टर वसीम के अलहदा और मेरे अलहदा, और टॉपिक वाइज अगर कर दें, और बेशक डेट भी अगर नीचे हो लिखी जाए तो ठीक है, मुनासिब रहेगा। तो वो जो है ना आपने मुझे सेंड कर देंगे। तो ये बेटा हमजा ये आज ही आप भेज दें, ठीक है हमजा जी? मैं कर दूँ ये, मैं आपको ना आपके अपने कंटेंट ये इसको भेज दें क्या उजैर? उजैर यस सर। ये बेटा आप इसको बता दें, ओके सर। या आपको ये भेज दें या डायरेक्ट ये मुझे भेज दें मेरे ईमेल एड्रेस पे। चलो सही है सर, वो आप तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, और ये आज ही जो है ना ये पहुंचा दें। ओके सर। ठीक ओके है सर। बेटा, ये हमजा बेटा। हाँ, तो ये आज के ये अभी जो है ना ये पेपर शुरू होना है, तो यहाँ तक आज के लिए बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही था इसका, ताकि आप भी जो है ना आपको कोई बस ये स्टार्ट करना मकसद था, और इससे डिटेल जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप तैयारी भी कर रहे हैं, इसके लिए आपको जो है ना थोड़ा सा लाइटली लोडेड, क्योंकि ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर मिड टर्म एग्जाम, सो दिस कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड एंड कैन बी स्टडीड लेटर ऑन, बट यू मस्ट नो दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सर एक सर अगर जी आप इस तरह करेंगे, ये जो हमारा टॉपिक है इसकी आप लाइक ये लेक्चर रिकॉर्ड करके सेंड कर दे। सर वसीम ने भी कुछ इस तरह किए थे, तो वो फिर हमें लेक्चर मतलब नेक्स्ट हमारे फिनिश हो जाएंगे वैसे ही। ठीक है, चले मैं ये भी कर सकता हूँ, ये यस भी सर, कर वो सकता रिकॉर्डेड लेक्चर आप हूँ जी। मैं मतलब सेंड कर। इंशाल्लाह ओके सर। कोशिश कर थैंक यू। ये रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज दूँ, और फिर ये है कि हम एक लेक्चर जो है वो ले भी लेंगे वैसे इसी में, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को अगर ओके सर। हाँ, तो ये आप बेटा अटेंडेंस ये ज़रा इसको ले कर लें, और फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अभी अब मुलाकात आपकी आपके साथ कैंपस में ही हो इंशाल्लाह। बाकी अगर मिड्स का पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ा बता दें। पेपर पैटर्न बेटा वही होगा जैसे पहले होता है कि 10 नंबरों का जो है ना वो क्विज होगा, और बाकी 30 का आपका मिड का पेपर होगा, और उसमें फिर ये होगा कि ये न्यूमेरिकली होंगे। सर उसमें हमारे पास टोटल कितने न्यूमेरिकल आ सकते हैं? उसमें तकरीबन जो है वो आपके मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 4 न्यूमेरिकल जो है वो, चूँकि ये 30 मतलब हाफ क्वेश्चन जो है वो उनका होगा, डॉक्टर वसीम का हाफ जो है वो मेरा होगा। तो 15-15 मुमकिन है कि 3-3 सवाल हो, या 2 सवाल हो, अभी उसका डिसाइड ही किया। तो बस आप तैयारी करेंगे, मतलब कोई भी टॉपिक जो है उसमें से आ सकता है। ओके सर। सर वो बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ये कहते हैं ना कि पेपर लेंथी था, इतने ज़्यादा क्वेश्चन या इस तरह हाँ, से वो भी। बेटा ऐसे है कि लाजिम बात है कि अगर फिर हम हमारी रिक्वायरमेंट जो है ना वो दैट विल बी इन अकॉर्डेंस विद द टाइम लिमिट। यस सर। ओके सर, थैंक यू। बाकी तो ये एक पक्की बात है कि आदमी को बहुत ज़्यादा टाइम भी दे दी जाए, अगर तो उसकी तैयारी है तो वो बहुत जल्दी कर लेगा, अगर तैयारी नहीं है तो वही टाइम उसको बिल्कुल इनसफिशिएंट लगेगा, एक नेचुरल चीज़ है। इसलिए आप तैयारी अच्छी करें, और तो फिर आपको महसूस भी नहीं होगा इंशाल्लाह। यस सर, इंशाल्लाह। तो बस मैं इंशाल्लाह आपको सपोर्ट भी जो भी हो सकेगा जितनी भी होगी, तो
हाँ, सारे सपोर्ट करते हैं वैसे, ताकि किसी का नुकसान हो, जिसने थोड़ी सी भी मेहनत की हो हम उसको जो है ना उसको उसका वो एक्नॉलेजमेंट हम उसकी एक्नॉलेज करते हैं कि भाई उसने काम किया, ठीक है। ठीक है उजैर, सॉरी यस सर। ठीक है, आपने अटेंडेंस ले ली? यस सर, वो मैंने स्क्रीन शॉट्स ले लिए हैं। जी ठीक, बस ये अब आपने इसको आने से पहले ये सारी की सारी जो अटेंडेंस है इसको रेगुलर करें, फेयर करें। यस सर, वो एक्सेल शीट जो है हाँ उसको एक्सेल शीट पे, कंपाइल हाँ करनी जी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक्सेल शीट पे। और इसका जो है ना ये मैं यहाँ पे प्रिंट ले लूँगा और ये मैं आपसे ले लूँगा, ये आपका और मेरा मामला है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। ओके जी एवरीबॉडी, गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह आपको सबको खैर वफियत से रखे। अस्सलाम वालेकुम। हमें